Now, बच्चे, come to page number 22 of chapter 5. Lesson is snow. Oral communication skill. डायलॉग बोलने के लिए आपको वैसे ही रीड करना है जैसे हम आपस में बात करते हैं, ठीक है? तो अपनी टीचर्स के साथ क्लास के अंदर इस रीडिंग स्किल को जरूर अपनाएं। एक्सरसाइज 2, रीड द गिवन वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम इन द लेसन। जी, आप यहीं वाइटनेस, बुशेस, पॉपकॉर्न बॉल्स और प्लेसेस को अपनी लेसन में दोबारा रीड करें और इन्हीं को अंडरलाइन भी करें। एक्सरसाइज 3 ऑन पेज नंबर 22 ऑफ लेसन 5, read and say the given words and notice the change in their initial sound. G, R at red, F at fed, B at bed, P in pin, T in tin, B in bin, S it sit, F it fit, it bit. Got it? So you have to practice like this. Exercise B, reading and critical thinking skills. Number 1 is reread the poem and answer the following questions. Number 1, what is this poem about? Yes, you know, it's about the snow falling. How would you enjoy snow falling? आप enjoy कैसे करते हैं snow falling को? And third question, what do the bushes look like when it snows? दरख्त की जो टहनियाँ हैं या झाड़ियाँ हैं तो वो स्नो में कैसे दिखती हैं? ये इनके क्वेश्चंस हैं और आपने इनके आंसर पोएम को पढ़ के खुद हमें टीचर को भी बताने हैं। Dear students, come to page number 23. Yes, exercise number 2, encircle the correct option of each statement. एक बात याद रखें, जब कभी भी हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपको बताएं, हिंट दें और बाकी आप खुद करें। अगर इसी तरह आप रोड से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लिहाजा अगर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स मैं करके दूंगी तो बाकी आप खुद करेंगे। स्नो मेक्स डेश वेयर इट फॉल्स। A, scene, B, whiteness, C, mad and D, crease. Definitely क्या करता है? Yes, option B, whiteness. Snow makes whiteness where it falls. जहाँ कहीं भी जाता है तो हर चीज सफेद हो जाती है। Now, like that, question number 2, the bushes look like dash, a watermelon, basketball, a popcorns or a snowball. सही है। और number 3 option is, and a place is where I always dash, sleep, study, play, sit. ठीक है? तो आपने इसमें खुद ही बैठ के अपने ऑप्शंस ढूंढने हैं। That's like good. Students. Words to sentences. Read the following sentences. A sentence is a group of words that makes a complete sense. यानी अगर कोई सेंटेंस हम लिखें और हम यूँ लिखें है काम मैं करता, ठीक है, या हूँ मैं काम करता, तो ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है। तो हम कहते हैं मैं काम करता हूँ। I do work, तो सही है। या Muslims are we, तो ये कभी भी सेंटेंस नहीं का, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। We are Muslims. This is the complete sentence. So join the following sets of words to write sentences. Number 1 is Ali plus is plus eating plus and plus apple. So you have to make the sentence complete and removing the plus signs in that or addition sign, and at the end you have to put the full stop at the end of the sentence. Great. Come to exercise number 5 of page 23. Look at the picture carefully. Write the names of any 3 objects. Then use these words in your own sentences. ये देखिए, that is a very exciting work. Look at the picture, what is happening in the picture. You have to see what is happening and pick up 3 of the objects which are existing in the picture और फिर वो आपने in blanks के अंदर लिखने हैं। Come to page number 24 of your English book of Munawwar publisher of grade 1. Got it? Now take yes or no according to the statements. Look at the picture. Number 1, I turn my face to my right while talking someone standing on my left. अगर आपके पास कोई लेफ्ट खड़ा हो और आप उसके राइट की तरफ मुंह करके बात करें तो ये क्या ठीक है? No. Yes, that is the right answer. I eat food with my left hand. No, really bad habit. We eat with right hand. I drink water with my right hand.
Yes, this is the correct answer. My left hand is closer to my left hand. Yes, I write with my right hand. Yes, there are some students who are writing with the left hand, so they can write. No, or some students, those who are right-handers, they can write with right. Okay. Now come to very important thing which the student must know about. Questioning words. You should know that what are the questioning words. They are made of who, where, which and when. So the question which start from the where, which, when and who, that will be the question. Now let's read the given sentences and notice the use of question words. Number 1. Who is your best friend? We are asking about somebody, so that is called who. Where is you from? This is asking about your place. Which is your favorite toy? So that is asking about your thing. When is he coming? When is asking about your timings. So you should know that. So at the end, it's all written. You notice that. So you can read them and you will better understand that. Now, the exercise of the question words are choose the right words from the word bank to complete the given question sentences. Got it? Where, why, who, when. So number 1 will be solved for you. Number 1 is dash are you. So we are asking about the person. So always come with who are you? Got it? And rest you are supposed to do. Dear students, at the end of exercise, we have some ethical and social development. Islam teaches us talking manners. We should speak gently. While we are in the classroom, we should try to speak when our turn comes. It will save us from noise and disturbance, flight and enmity. अच्छा, इसमें हमें ये लेसन दिया गया है कि इस्लाम हमें बहुत अच्छे अखलाक सिखाता है कि हम अच्छे अखलाक से बात करें, नरम तरीके से बात करें। जब क्लास में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे किसी सवाल का जवाब दें या हम किसी की बात का जवाब देने से पहले ही बोल पड़ें या किसी बात के लिए हम इंतज़ार ना करें और बोलना शुरू कर दें, तो उससे कई चीज़ें पैदा होती हैं। नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, शोर और तंगी, फाइट लड़ाई और एनमिटी दुश्मनी या एक दूसरे से हम जारी बात है जब हम फाइट करेंगे तो एक दूसरे के साथ एनमिटी पैदा हो जाएगी और एक दूसरे के साथ हम अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द वन ऑफ द ग्रेट एक्सरसाइज आई हैव डन। सो आई होप you have enjoyed this chapter and learned many things from that. See you for the next lesson. Allah Hafiz.